Mm. Assalamu alaikum everyone and welcome to Wicket Podcast PSL 6 midweek review. Unfortunately आज मुनीब भाई हमारे साथ नहीं है but I have Clive aka Vanilla Wala. This is your host AZ Khwaja. Clive, Islamabad United के fan हैं आप और you've just set a record in the PSL 6, the most wins by any team in the group stage. कैसा feel कर रहे हैं आप? Yeah, I'm so very happy. I knew that PSL 5 was a unlucky streak for us. It was just bad luck. Or PSL 6 maybe we have proven everything right. We have gotten everything our way and all that, and that's all clinical performance from the guys. So yeah, I'm very happy. आपके लिए उस्मान ख्वाजा आउटस्टैंडिंग 100 दैट डे अगेंस्ट जल्मी और राना फहीम भी फुली फिट हो गए हैं. मेड प्लेड एन आउटस्टैंडिंग मैच यस्टरडे, विकेट भी ली और आउटस्टैंडिंग कैचेस भी लिए. तो कल के लिए एक आपका बहुत बड़ा क्रूशल प्ले ऑफ गेम है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स हु मेड एन अमेजिंग कमबैक. कुछ उनके बारे में बताएं कि उन्होंने ये रिसर्जेंस कैसे की अबू धाबी लेग में आके पीएसएल 6 के. यार मुल्तान दे डिड वन थिंग, क्योंकि इस्लामाबाद एक चीज करती है ना. उन लोगों ने बोला कि बैटिंग दैट मुल्तान ने हैज गॉन ऑपोजिट डायरेक्शन. और लोगों ने बोला कि बैटिंग डेप्थ दे कैन लीव असाइड बैटिंग डेप्थ, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स नहीं है बैटिंग डेप्थ करने के लिए. सो दे वेंट फॉर क्वालिटी बैट्समैन. सो यू हैव रिजवान, शान मसूद, शोएब मकसूद, Riley Russo, all solid players, and they have a higher gear to kickstart. Okay, and that is what they did. They went ki we हमसे runs बनेंगे, and whatever runs we score, our bowlers will defend. And you see they have they have Dahani performing, they have Imran Khan performing, they have Sohail Tanvir performing, Imran Tahir is there. So they have always had their bowlers, picking their slack, but their batting does a good enough job to keep them in the games. And especially in the games, I think when they beat Lahore and Quetta, those are two games where their bowling really laid down, showed that what is their potential, what they can do when everything goes right for them. बिल्कुल. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन. शाहनवाज धानी तो आउटस्टैंडिंग रहे, 20 विकेट्स ऑलरेडी इन द पीएसएल, बट इमरान खान सीनियर हैज आर्ग्यूबली बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर इन द पीएसएल, स्पेशली अबू धाबी में आए. जब ये इन्होंने अपने प्लेइंग 11 में इनको डाला है तो उन्होंने बिल्कुल ही उनके मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम की डायनामिक चेंज कर दी उन्होंने. Yeah, Imran Khan senior. Actually, I wasn't expecting him to, be that big of an impact as he was. But I think it is more to do because bowling attack. May if you have a stronger bowling attack, then you can do much more. Like you become better as well. So I think that is what has happened with Imran Khan, because he has done everything right. More or less most of the things which he has done this PSL, he has always been doing. He has been rewarded much more for it this time around. And the thing is, if he's not getting wickets, he's more than willing, to keep the scoring rate down. Especially, I think, वो Lahore वाले match में, he was the one who made sure कि boundaries ना पड़े in the power play, and he did that job really well. अब क्लाइव थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं. पाकिस्तान टीम की ऑलरेडी T20 टीम की सिलेक्शंस हो गई हैं फॉर द इंग्लैंड टूर एंड द वेस्ट इंडीज टूर. उसमें दो नाम आ रहे हैं, आजम खान और हैदर अली. बट अगर हम PSL 6 की फॉर्म देखें तो सोहेब मकसूद और शोएब मलिक, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग एंड आजम एंड हैदर हैव बीन कंप्लीट फ्लॉप शोज. तो क्या पीसीबी ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, क्या मोहम्मद वसीम ने थोड़ी जल्दबाजी की है टू पिक आजम खान एंड कंटिन्यू विद हैदर अली इंस्टेड ऑफ फॉर्म गाइज लाइक सोहेब मकसूद एंड शोएब मलिक? यार फॉर्म की बात, the thing is, I see this is like a very tough question to answer, because I would rather go and see what can Azam and Haider give you in this format. Now you put them in the international setup, you can see what these guys can do against international fast bowlers, what they can do against like a Stokes or Wood or whatever they face, and what they do in West Indies again, like a full strength West Indies side. So I want to see what these guys can do with that, because Azam can perform in the PSL. He has done this Abu Dhabi leg hasn't gone well for him, but you know what he can do in the PSL. Haider also you have seen. So I think it's, if you give them more chances, it will be better. Malik, I don't think so is coming back, because उन लोगों ने बोला था that they are not looking at him for a while. Sohaib Maksud is one I'm really actually surprised that they have not selected him. They can easily include him, because he has been one of the reasons why Multan Sultans have had a turnaround, and he deserves that spot in the at least the ticket to England and West Indies.
आपने टर्न अराउंड की बात की तो केके एब्सोल्युटली फ्रॉम द डेड कमिंग बैक स्ट्रांगली एंड क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ स्टेज थैंक्स टू अनदर मैन हु हैज बीन डिस्कार्डेड दानिश अजीज हु जस्ट सेट अ पीएसएल रिकॉर्ड। एक ओवर में 33 रन्स उन्होंने मारे हैं विल्डरमुथ को, और उससे पहले उन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ भी उस क्रंच मैच में बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्विक रन्स किए थे। एंड ही इज आल्सो नॉट इन द टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड फॉर इंग्लैंड और द वेस्ट इंडीज। Yeah, this is where I think Pakistan does a huge mistake. They discard their players too quick. You should give these guys, you should give them a long rope. And I understand that T20s, international T20s, बहुत कम आते हैं. But if you pick them, at least give them a 10 game. Because if there's nothing else you can judge him on. If not, wasn't actually Pakistan A. I think for the Shines he did decent enough against the New Zealand A team in New Zealand. So I don't see why they didn't persist with him. They could have easily persisted with him and see. Or yeah, he's a left-hander. Okay, so that is also an added dynamic in your batting lineup, which you can definitely try. तो अब क्वालिफायर की अब बात करते हैं और एलिमिनेटर 1 की सबसे पहले बात करते हैं। पेशावर जल्मी टेकिंग ऑन कराची किंग्स, व्हाट डू यू थिंक उस मैचअप में किसको आप फेवर में देख रहे हैं? Peshawar Zalmi for sure because they have a better batting. Their batting is clicking now, and their bowling is, I think, still decent enough. And but the problem is Karachi Kings' key batting has been struggling. It's been Babar or bust, and that has been happening for a long time now. If I think with Danish Aziz coming back into form and Imad Wasim also contributing, things might change. But they need to do really well with the bat or ball, and with the ball, Karachi Kings have to improve because you can't be as bad as they have been this season and just hope to win the whole league. आई एग्री विद यू। अगर शर्जील और बाबर इनको 185 तक प्रोपेल कर दें, ऐसे कोई बड़े टारगेट पे प्रोपेल करते हैं, फिर इनका बॉलिंग अटैक थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, वरना मुझे लगता है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू डिफेंड अ लो स्कोर। आई एग्री विद यू देयर। अब चलो हमने इनकी तो बात की, अब आपका तो चलो आप बहुत ज्यादा बायस्ड हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड टेकिंग ऑन मुल्तान सुल्तान्स इन द फर्स्ट क्वालिफायर फॉर द फाइनल, द टॉप 2 टीम्स। इस मैचअप में आपको क्या लग रहा है, क्या टीम चेंजेस आप लोग करने वाले हैं, क्या टीम चेंजेस मुल्तान सुल्तान्स करने वाली हैं, और ऑफ कोर्स ओवरऑल रिजल्ट थोड़ा सा अनबायस्ड रहना है आपने। Yeah, I think Islamabad might drop Talat. I'm not. They might have to go there because I would like someone like Musa against this Multan Sultan's lineup, and then you can have Fahim as a floater as a batting floater or bowling to वैसे भी करते हैं. Hassan Ali will be back. Fawad Ahmed will be back. Ali Khan might play as well. So most of the team will be the same, I think, as the one we played against Karachi, with only change being Talat going out for Fahim coming in, and then hopefully Musa gets game time. I think that is one thing, hopefully, because I against Sultans we know they don't have much batting, so if you go for the kill for their batting very early, then uh, any team has a chance against them. ऑफ कोर्स मोहम्मद अखलाक ने भी हमने देखा था अच्छे रन्स किए और एज अ कीपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चलो ये तो अब सक्सेसफुल टीम्स की बात हो गई। अब अनफॉर्चुनेटली द बिगेस्ट फ्लॉप शो, द अनबिलीवेबल कोलैप्स ऑफ लाहौर कलंदर्स। They had 5 wins in 6 games. They were riding on top of the table, looking pretty. उन्होंने सिर्फ एक मैच जीतना था 4 में से, and they chose to field first in every single game and they lost every single game. उनका net run rate तबाह हो गया। उनके बड़े बैट्समैन फखर जमान, मोहम्मद हफीज ने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया, और इन द एंड अनबिलीवेबली लाहौर कलंदर्स विद 5 wins and 10 points got knocked out of the PSL 6। ये कैसे हो गया और ये क्यों हुआ मेरे साथ, आप जरा एक्सप्लेन करें। Yeah, why asking me कैसे हो गया? You tell me what do you think went wrong? Who do you blame for this? Like यार someone. चले मैं अब एक लंबा चौड़ा एक मोनोलॉग पे जाने लगा हूं, बट सबसे पहले चीज जो वाजे तौर पे नजर आ रही थी कि फील्डिंग वाज एब्सोल्युटली गार्बेज। हमने हर मैच में कम से कम 2 क्रूशल कैच छोड़े हैं, हर मैच में, लिटरली हर मैच में। बाबर आजम का तो सचिन एट मोहाली वाला सीन किया था, उसके 3-4 कैच हमने छोड़ दिए थे, और वो पहले स्ट्रगल कर रहा था, ही वाज इंजर्ड बट ही स्टिल मेड अनदर वाइटल 50। दैट शोज के टीम के डिसिप्लिन कोई नहीं है और कोचिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, कि वो बस कुछ गेम प्लान बनाता है और ये लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते। वी वर बीइंग कैरीड बाय इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। कभी राशिद खान आउटस्टैंडिंग थे, कभी शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग थे, कभी जेम्स फॉल्कनर आउटस्टैंडिंग थे, कभी टिम डेविड आउटस्टैंडिंग थे।
एज अ यूनिट इन्होंने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। और फखर जमान और मोहम्मद हफीज तो सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं। आप देसी प्लेयर हो, आपने लाखों मैच खेले हुए यूएई में, और आपसे अबू धाबी में यार 5 मैच में आपसे एक स्कोर नहीं हुआ। फखर ने एक मैच में 40 ऑट किए, एंड मोहम्मद हफीज वाज अ कंप्लीट नो शो। इन पे ही हमने रिलाई करना था कि इन्होंने बैटिंग कैरी करनी है, बट दे केप्ट गेटिंग आउट अर्ली टाइम एंड अगेन। और क्रेजीली हम बार बार चेस कर रहे हैं, हमसे नहीं चेस हो रहा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और चौथे की मैच में भी इन्होंने फिर चेस ले ली, और फिर वही हुआ, ये लोग कोलैप्स कर गए, बड़ा स्कोर पड़ गया। हारिस रऊफ अनफॉर्चुनेटली वेंट फॉर रन्स, उनकी उसकी तो आदत है, यू नेवर नो, इन 2 आउट ऑफ 3 गेम्स ही गोस फॉर 35-40 रन्स। और यही हुआ, सोहेल तनवीर ऑफ ऑल पीपल खेल गए, एंड ही मेड द टारगेट आउट ऑफ रीच, और हमें पता था सेकंड इनिंग्स में कि कोई सीन नहीं है। तो वंस अगेन अ बिग डिजास्टर फॉर लाहौर कलंदर्स। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान जैसे टॉप 3 T20 बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड आपने टीम में रखे हुए थे, और तब भी आप लोग यार प्लेऑफ स्टेज नहीं आए। इट्स अ बिग शॉक, एंड आई थिंक मैनेजमेंट के पे सवाल उठते हैं, आकिब जावेद पे सवाल उठते हैं, और ऑनेस्टली इस ओनरशिप पे भी सवाल उठते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। Yeah, one thing is, I completely agree with you that why did you decide to chase for 4 games in a row? Okay, आपकी bowling attack देख लो, you have Shaheen, you have Rashid, you have Haris. You can definitely make a plan to defend with these three guys at least. और अहमद यार आप दानियाल तो 140 भी करो, इनकी इतनी क्वालिटी है, वो उसको 160 बना देंगे, एंड दैट्स हार्ड टू exactly चेस इन अबू धाबी। exactly और अहमद दानियाल as your fourth bowler was pretty decent. James Faulkner as fifth bowler was very good. ठीक है, तो my question is why, especially in that Karachi game, okay, when you know that Karachi has a tendency to go slow in chases, Babar likes to be more circumspect. Why couldn't you decide to, like, defend? Why didn't you let Karachi chase down the total? Because अगर आप 150 बनाते 155 160 भी बना लेते, okay, Karachi would be under that pressure because they are playing to survive. सब मस्ट Uh, विन था बिल्कुल। yeah, so you are put that pressure is there on you as well. Then you have to face such a good bowling attack. So it was never going to be easy, and then that whole thing collapsed. I wouldn't blame any, like, wouldn't blame the players, okay, but the management, the think tank should have done better. And one thing which I really felt Lahore was really unlucky was when they lost that second game to Islamabad United. The one where they got Islamabad United 20 for 5, and they required 67 in 10 overs. Those are two situations where you have to finish the game off. It यार is बट क्लाइव, इट इज नॉट लक कि अगर आपने टीम को 20 for 5 पे करके 155 खा लिया, ऊपर से आप 86 for 2 करके आप 120 पे ऑल आउट हो गए। दिस इज जस्ट देयर इज नो टीम वर्क, देयर इज नो प्लान, देयर इज नो स्ट्रेटजी कि यार हेड कोच की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही। ये सारे बड़े नामी प्लेयर हैं और इनसे किसी से भी परफॉर्म नहीं हुआ एट द राइट टाइम, एंड इट्स बीन अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। हमें तो कहा था यार हम प्लेऑफ में आ जाए तो इन अ वन ऑफ हमारी बॉलिंग किसी को भी उड़ा सकती है, और एंड में हम खुद फिर प्लेन पे बैठ के उड़ गए हैं उधर से। अब क्या कर सकते हैं। Oh god. Like I when the Abu Dhabi leg started, I was pretty sure that having Rashid Khan for the entire season would clearly make Lahore favorites. Because my understanding was it would be Islamabad Lahore playing the final for sure at that point. सबकी एक But प्रिडिक्शन थी यार, इजलू लाहौर सब लगे हुए थे, लेकिन yeah, अनफॉर्चुनेटली एक और टीम है दैट आल्सो टुक द वुडन स्पून, एंड दैट्स द क्वेटा ग्लैडिएटर्स। टू बैक टू बैक लास्ट प्लेस फिनिशेस इन PSL 5 एंड PSL 6। वो थोड़े no, अनलकी भी थे, उनके टॉप प्लेयर्स बार बार इंजर हो रहे थे, बट यार अगर उनका स्क्वाड भी बंदा देखता है, कहता है यार देयर आर अ लॉट ऑफ गैप्स। सरफराज प्लेड प्रीटी वेल इन द PSL, लेकिन ओवरऑल इनके स्क्वाड का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक नहीं था। And do you think Sarfraz is the right man to lead this franchise in PSL 7? yeah, who else can lead this franchise? Are you going to give Azam Khan the job? Because he's the only guy who's, or you give Mohammad Nawaz the job. Like फॉरेन who are कैप्टन भी ला सकते हो, जैसे लाहौर ला चुका है आपने, उस्मान ख्वाजा से भी एक मैच में कैप्टनसी करवाई है। मे बी दैट कैन बी एन ऑप्शन, बट ओवरऑल व्हाट डज क्वेटा ग्लैडिएटर्स नीड to become a competitive team once again in PSL? Quetta Gladiators need a huge revamp. They need to get rid. They have to first of all they need to improve on their bowling. They let go of Sohail Tanveer for some reason. They let go of Riley Russo last season. You can't let go of players, especially when you know Sohail Tanveer. No, leave Sohail Tanveer. Riley Russo was someone who's always going to be picked. Okay, you know his availability is 100% for the league.
You let him go, which was a very strange decision. Yeah. Then you let Sohail Tanveer go, knowing what he's capable of, and you retain Umar Akmal at that point. Okay, Khair Umar Akmal ka thing was there still 50-50, but it was अहमद bad luck. शहजाद भी थे इनके पास. Yeah, exactly. Ahmad Shahzad didn't work out for them. I think a lot of things didn't work out, but this season at the draft, they did really poorly when they got Tom Banton, Dale Steyn, and Chris Gale. Knowing, I'm not doubting Chris Gale's T20 credentials, but you knew his availability is going to be an issue at some point in the season. और वो PSL फ्लॉप भी तो रह चुका है फॉर लाहौर एंड फॉर कराची यार. Yeah, that is in UAE, right? But in Karachi, like we saw what he did in Karachi. But his biggest thing was, which always worked against him, was his availability issue. Top Banton, we know, has not done well in Pakistan. Okay, Yeah. he has actually not done well in Asian conditions at all. So you know what you're expecting. You're taking a punt basically on Tom Banton. Dale Steyn, I don't understand what was the requirement, because he hasn't performed well in T20 for a while, and उसको especially when आजम के साथ फिशिंग पे लेके जाना था ना उन्होंने, यही प्लान था उनका. Bichara. But basically, you're pairing Dale Steyn with Naseem Shah, Mohammad Hasnain. You have three out and out fast bowlers. Okay, and Hasnain and Naseem are too young to carry the bowling attack. Dale Steyn is very erratic. Naseem and Hasnain are also at the same time very erratic. And I'm sure Naseem or Hasnain improve karenge. But these are two guys you can't ask them to carry your bowling attack. Hasnain is good, but he's not good enough to be the lead bowler. Then you have Shinwari, who's bowling for you, who's definitely not cut out for good enough for the PSL to at least be the मतलब lead. बेसिक इशू ये नजर आ रहा था कि इनके पास बॉलिंग में कोई लीडर नहीं था और इनके पास बैटिंग में भी कोई लीडर नहीं था. रायली का रोल वही होता था उस टीम में कि यार ही हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर. और जैसे आपने मेंशन किया सोहेल तनवीर भी, आपको पता है प्रेशर मोमेंट्स में वही बॉल लेगा, वो बच्चों पे नहीं छोड़ेगा कि हसनैन और नसीम करें या कोई और करे, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वेदर दैट पेड ऑफ और नॉट. अब इस टीम का कोई लीडरशिप रोल नहीं, किसी का भी नहीं है सरफराज के अलावा. हमने खुद देखा है वो काफी फ्लस्टर्ड हो जाते हैं, वो काफी एंक्शियस हो जाते हैं, बॉलर पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं. अब आजकल तो ऑपोजिशन के फास्ट बॉलर से भी लड़ रहे हैं. अब देखते हैं कि क्वेटा को एक रीबूट चाहिए, लाहौर को एक रीथिंक चाहिए, और बाकी तो अपनी जगह सेट हैं. उनकी लीडरशिप्स ऑफ कोर्स इन प्लेस है. डैरेन सैमी एज हेड कोच भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जल्मी में, और मुल्तान सुल्तान ने जबरदस्त ड्राफ्टिंग की है. एंडी फ्लावर, इस्लामाबाद को तो हमें पता है दिमाग से पॉलिसी हमेशा चलती है. एंड ऑफ कोर्स द फोर्थ टीम कराची किंग्स. एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी तो है, क्वालिटी नहीं होगी, टैलेंट नहीं होगी, लेकिन स्टेबिलिटी उनके पास हमेशा है. Yeah, Karachi Kings has someone like Amir, Imad, Babar. They know what these guys are getting into, right? Like, so you know the team. And the thing is, for solid players, I think Karachi leg mein they had a lot of solid players around them. This time it didn't work out because this is why they suffered a bit, क्योंकि वो for overseas players थोड़े solid नहीं थे. But one thing about you said about Sarfaraz's captaincy, I was watching this video where Rizwan was saying कि यार जब बॉलर को मार पड़ती है then you are always smiling, you are never looking to shout at them or anything, you always go and talk to them with a smile and all that. तो रिजवान ने बोला था कि यार हम सब इंसान हैं, ओके, और जब बॉलर बॉलिंग करने आता है तो उसको ये नहीं चाहिए कि वो मार खाए, वो भी नहीं चाहता कि उसको चौका पड़े, राइट? तो अगर मैं उसको चिल्लाऊं तो वो ऑलरेडी बुरा फील कर रहा है, वो और बुरा फील करेगा, उससे क्या फायदा? तो एटलीस्ट अगर मैं थोड़ा स्माइल करूंगा तो वो थोड़ा कम बुरा फील करेगा, वो सोचेगा कि अच्छा चलो कैप्टन की तो सपोर्ट है एंड ऑल दैट. एंड इज लाइक दैट इज आई थिंक विच इज क्लियरली लैकिंग. हम लोग वी डोंट टॉक अबाउट, वी थिंक दैट ही इज अ वेरी पैशनेट कैप्टन. सरफराज ऑब्वियसली पैशनेट कैप्टन, मगर थोड़ा स्पेशली अगर आप लूजिंग टीम में है and your captain keeps shouting at you, you have no place to hide. It becomes, because then fans start looking at you as the fault in the team. So I think that is one big concern कि थोड़ा सरफराज, I think it's too late now for him to change his captaincy style. But one thing Quetta really need to do is they need to do better at the draft. And one thing is they have messed up two drafts this season by going for emerging picks which are not good enough. Like this year they went with Sam Ayub. Last year I don't know who they went with, but they went with the batsman as well. You can't go. Her PSL team always goes for a emerging bowler. Every PSL team has learned that by now. Batting, because you can hide a bowler, you can't hide a batsman. And I don't know वेरी why वेरी Quetta does that.
बिल्कुल emerging में हमने देखा once again वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी are taking the limelight in PSL 6. So thank you so much for this midweek wrap up, Clive. Best of luck to you in the playoff stage. मैं of course बिल्कुल insincerely ये कह रहा हूँ, लेकिन चलो आपकी खातिर मैं कह देता हूँ. Thank you so much for joining me tonight. I know you bleed red, bro. जब आपकी नसें काटते हैं तो red comes out. यार वो तो सभी ब्लीड रेड करते हैं. आप क्या कह रहे हैं? हर इंसान इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है. See, so bro, वो छोटा पार्ट होता है दिल में, फिर they know that Islamabad is the best. यार मेरे दिल में तो बहुत ही छोटा पार्ट है फिर. चलिए, thank you so much, Clive, for joining me, and best of luck to all the teams in PSL 6. Yeah, thank you.